अहमद यार खान जो कलाब के रूलर थे, he had no option but to speak to India and gave his consent to SCO, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जाना पड़ा। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव and I welcome you to this new episode of my channel Discovering with नीरज। आज बात करते हैं पाकिस्तान की और कैसे हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं उसी की भाषा में, टू मेक इट अ यूजलेस वेजिटेबल स्टेट विदाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान का बनाइए पिज़्ज़ा और उसके चारों प्रोविंसेस के बना दीजिए स्लाइसेस अलग अलग। देन यू विल गेट बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंधु देश एंड द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। Pakistan, as you all know, did not have a natural birth. It was forcibly cleaved out of the Iranian plateau for Balochistan, southeastern corner of Afghanistan, the northwest frontier provinces for Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. The Indian Punjab region, which was the larger and the whole of Punjab, was split into eastern and western Punjab, with the bigger western Punjab going to Pakistan. We were left with the eastern Punjab. And as with every unnatural birth, there were genetic problems which have remained till this day, growing bigger and more vicious. Unfortunately for the world, Pakistan was born in a breech position. That is, it came out as first. Today, Pakistan is being pulled in three different directions, with the Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh demanding independence and secession from Pakistan. Sindh is now calling itself Sindhu Desh. This will mean if these three provinces, Pakistan has four provinces, which I have just named, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Punjab of Pakistan. So इसमें से अगर तीन provinces निकल जाते हैं of Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa वो भी मांग रही है independence, and Sindh which is claiming its independence and the right to be called सिंधु देश, तो सिर्फ बचेगा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। दिस विल मीन दैट 81% ऑफ पाकिस्तान्स लैंड मास विल बी गॉन and only 19% will remain. It will become just a small state, probably much smaller than Uttar Pradesh also. Nothing much needs to be done here. ये लोग अपना गड्ढा और अपनी कब्र खुद ही खोदते रहते हैं. The people of Balochistan have been fighting for their independence since 1948. It's the same time as when Pakistan occupied Kashmir and what is now known as POK. And we have just to fuel the ambition of the Baloch people and support their independence movement overtly and covertly. अब शर्माने की और डरने की ज़रूरत नहीं है. खुल के हम लोगों को आना चाहिए कि बालोचीज को सपोर्ट करना है. In the present India-Pak conflict, had we not accepted the ceasefire and had we contained in the present India-Pak conflict, had we not accepted the ceasefire and had we continued to bombard Pakistan or strike them for the next 5 or 7 days, the Balochis would have declared independence and moved away from Pakistan. In fact, many of their leaders said that had India been there for the next 7 days fighting and involved with Pakistan, we would have gained our freedom. Anyway, that's past. As it is around the 12th of May 2025, the leaders of Baloch people declared independence from Pakistan with their new nation named as the Republic of Balochistan. Pakistani Sarkar, cunning and devious as usual, has invited China to extend its CPEC corridor into Balochistan to exploit the rich natural resources there and also to act as a deterrent to Baloch attacks. ये पाकिस्तान की ये कोई नई चीज़ नहीं है. वो खुद सामने आता है तो कम आता है, वो दूसरों की आड़ में काम ज़्यादा करता है. जैसे हिंदुस्तान से आमने सामने नहीं जंग लड़ सकता, तो वो टेररिज्म की बात करता है एंड टू फिनिश इंडिया विद 1000 कट्स. दैट इज़ व्हाट दे से. सो यहाँ पे ये चाइना को इन्वॉल्व करके और जो सीपेक कॉरिडोर बना रही है चाइना, उसको ये लोग बलूचिस्तान तक ला रहे हैं, क्योंकि उससे इनको जो ग्वादर पोर्ट है, विच इज़ अ डीप सी पोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के दो मेजर पोर्ट्स हैं. वन इज़ कराची विच इज़ इन सिंध ऑन द अरेबियन सी एंड द अदर इज़ ग्वादर पोर्ट अगेन ऑन द अरेबियन सी बट इन बलूचिस्तान. इसके अलावा पूरा पाकिस्तान लैंडलॉक्ड है. एक इनके ईस्ट में हम लोग बैठे हैं इंडिया, इनके नॉर्थ में बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान एंड
आपके ताजिकिस्तान and all those Azerbaijan and all, and on the west you have Afghanistan again and Iran. So सिर्फ इनका निचला जो सदर्न पार्ट है वहीं पे दे हैव द अरेबियन सी विद देम, एंड दिस ये पोर्ट जो ग्वादर का है ये लोग चाइना की मदद से डेवलप कर रहे हैं, एंड Balochis are not happy with this, and also at the same time it has not deterred the Balochis from hitting and killing the Chinese also. They view Chinese as land grabbers and a vicious parasitic nation which devours its own. तिब्बत खा गया हम लोगों का, जहाँ जाता है इधर अक्साई चिन खा गया असम में, जब लड़ता है कहीं जाके कब्जा करता है वहाँ जाके बैठ जाता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट लुक नाउ एट द हिस्ट्री ऑफ बालूचिस्तान and why it deserves independence. Balochistan, first of all, was never a part of Pakistan. In fact, other than Western Punjab as Pakistan, no other province was integral to Pakistan's ideology, culture, or people. Pakistan was born on the 14th of August 1947, while Balochistan has a history going back 7,000 years. The Balochs are a separate ethnic group जिनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी आइडेंटिटी है, सब कुछ उनका अपना अलग है. And they bear no cultural or symbiotic relationship with Pakistan. The merger was a forced one with a parasitic relationship. पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है with the national capital and major military headquarters became parasites, exploiting and living off the riches of its host province Balochistan, क्योंकि बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं. खान मीर अहमद यार खान, द खान ऑफ कलात. बलूचिस्तान वॉज अर्लियर नोन एज कलात. Khan Mir Ahmad Yar Khan, the Khan of Kalat, being the legitimate ancestral ruler of Kalat, Las Bela and Makran, declared independence from British rule on 11th August 1947, 3 days before Pakistan was born. For the next 1 year, he kept requesting Jinnah कि हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्टेटहुड दे दीजिए, बट जिन्ना ऑब्वियसली रिफ्यूज्ड. दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड कि पहले इनको ये सपने दिखा दो कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए और उसके बाद इनको घसीट के अपने में मर्ज करा लो. बिकॉज द ब्रिटिश, एज पर देयर एग्रीमेंट विद द बलोचीज in 1861, had given them this permission that they did not have to accede to either India or any other British empire. They could remain whenever British moved out, they could become independent once again. पर ऐसा हुआ नहीं. जिन्ना ने मना कर दिया, इनको बहलाते रहे, साल भर तक टहलाते रहे. एंड देन मिस्टर अहमद यार खान जो कलात के रूलर थे, he had no option but to speak to India and gave his consent to accede. At this point of time, a colossal mistake happened. India's Secretary of State at that time, VP Menon, is to be blamed for this catastrophe which happened, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जाना पड़ा. The Khan of Kalat had sent a secret message to the Indian government conveying its intention to accede to India. VP Menon mentioned this to the All India Radio that the Khan of Kalat was offering accession to India, but India was in no position to help. Now this confusion becomes confounded. In an act of monumental stupidity, the All India Radio announced this on the same day, 27th March 1948. The rest is history and sufferance for the Balochi people. Pakistan's armed forces invaded Balochistan and the Khan of Kalat had to surrender and accede to Pakistan. Since then, over 78 years, Balochistan has remained the most underdeveloped and poverty-stricken province of Pakistan, though it is the most mineral-rich state with vast reserves of gold, copper and coal. The Balochis have been singled out for mass executions, genocide की level तक, brutal rape, murder, exploitation
and most of its senior leaders or powerful leaders have been systematically murdered. The Balochis are free spirited, close knit ethnic group and are formidable warriors. With their limited resources and manpower, they have given a bloody nose to the Pakistani army time and again. ये थोड़े से हैं बेचारे, लेस देन 5% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, पर इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर दिया है. अभी भी इन्होंने करीब 10 दिन पहले एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय को उड़ा दिया था लैंड माइन से. इंडिया मस्ट सपोर्ट द बालोच फ्रीडम मूवमेंट. इफ नीड बी, डू इन बालूचिस्तान व्हाट पाकिस्तानीज हैव डन टू अस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अटैक करिए, एंटर करिए, इंश्योर बालोच इंडिपेंडेंस एंड देन मूव बैक, हैंडिंग ओवर बालोचिस्तान टू द बालोच पीपल. We had done this in Bangladesh, East Pakistan then, and had created Bangladesh for its people. We can do that again in Balochistan. Now, I believe that here is what India must do. 1. Support the Baloch liberation movement. Provide weapons, medical supplies and training to Balochis, as we had done with the Mukti Bahini in Bangladesh in 1971. We have an Indian naval post just 40 nautical miles off the port of Gwadar, Balochistan. इसको हम लोग सप्लाई पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं to provide them with ammunition, weapons, training and whatever else is needed. Third, officially recognize the Republic of Balochistan and give it diplomatic status. इन्होंने अभी हम लोग से हफ्ते भर पहले ये मांग भी करी थी हिंदुस्तान से. We are already at the rock bottom of our relationship with Pakistan and it cannot go any lower. Nor should we now care about its political ramifications. Just so much snot for thought. अब कोई चीज़ की शर्म हया और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70 साल पहले पाकिस्तान ने हम लोग से POK छीन करके हम लोगों को और उस पर आज तक बैठा हुआ है, और आज़ादी के नाम पे कि उनको वो आज़ादी दिला रहा है कश्मीरीज़ को, जबकि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है. हम लोग यही चीज़ पाकिस्तान के साथ उनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं अगर हम लोग ने बालूचीज़ को सपोर्ट कर दिया और वो लोग अगर अलग हो जाते हैं, और ऊपर वाले से उम्मीद है कि ये होगा. दिस विल गिव पाकिस्तान अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन. It will experience what it has been doing to India with POK. Number 5, and ये बहुत ही पुरानी कहावत है, it's a way of warfare. An enemy's enemy is your friend. And we should not let this opportunity slip, especially as our Balochi allies are formidable warriors. जब इन्होंने इतने कम हथियारों से और इतनी कम संख्या में पाकिस्तानी आर्मी की हालत ख़राब कर दी है, तो ये सोचिए कि अगर इनको पूरी तरह से वेपन्स मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए और इनके लड़ाके तैयार कर दिए जाएं इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से, तो ये क्या हाल करेंगे पाकिस्तान का. What Pakistan will lose? Pakistan will lose 44% of its total land mass or almost half of its present size. अगर बलूचिस्तान निकल जाता है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान आधा रह जाएगा. पाकिस्तान विल ऑल्सो लूज इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन केस ऑफ वॉर. नंबर 3, it will lose its buffer state against Iran and Afghanistan, which are both inimical to Pakistan. अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उसके जो वेस्ट ईस्ट में तो हम लोग हैं, इंडिया है, वेस्ट में जो इनके दो एनिमीज़ हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, उन दोनों के बीच में बालूचिस्तान है एज अ बफर स्टेट, पाकिस्तान के कैपिटल और उनके हेडक्वार्टर्स को बचाए रखते हुए. Number 4, it will lose its most mineral rich province. Number 5, it will lose huge reserves of gold, copper and coal, as well as other important minerals and natural gas reserves. And most importantly, Pakistan will lose its strategic nuclear arsenal, depriving it of second and third strike capability. It will lose Kirthar and Kuzdar mountain underground nuclear sites, as well as Kahuta and Khuzba nuclear complexes and the Chagai Hills nuclear testing site.
अगर बलूचिस्तान चला जाता है तो इनके जो सेकंड और थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ की जो इनके जो फोर्ट्रेसेस हैं, न्यूक्लियर फोर्ट्रेसेस हैं, वो इनकी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. ये कभी न्यूक्लियर अटैक का जवाब दोबारा नहीं दे पाएंगे. It will also lose important air bases and military garrisons like Chaman, Khozdar, Loralai, Quetta, Zob, Turbat and Pasni. Furthermore, Pakistan will lose its entire naval facilities excepting Karachi port, which is in Sindh, since all the important deep sea ports of Gwadar, Ormara and Sibi will be gone with Balochistan. The Pakistan army will lose 27 Baloch battalions, and these battalions are the core of the Pak army with a 200-year martial history behind them. 10th point, and if we can cut away this pizza slice of Balochistan, then this will ensure that Khyber Pakhtunkhwa and Sindhu Desh will also break away in time. At the end, I'm already shedding crocodile tears at the prospect of a बेचारा पाकिस्तान, क्योंकि बचेगा बेचारा 19%, 81% उसका हो चुका होगा गायब, और वो रह जाएगा सिर्फ अपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर के साथ. So let's come together and support the tortured and exploited people of Balochistan. Jai Hind, Jai Bharat.